Hola, todos. Welcome back to our Spanish alphabet series. In the last episode, we learned the letters H, I, and J, and today. In this new episode, we are moving forward with the letters K, L, and double L, so let's begin. K. K. The letter K is rare in Spanish. It mostly appears in words borrowed from other languages like Greek or English. K often shows up in scientific or international terms. In everyday Spanish, C or Q are usually used instead of K. स्पेनिश में के अक्षर बहुत कम होता है। यह ज्यादातर ग्रीक या अंग्रेजी जैसी दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्दों में आता है। के अक्सर वैज्ञानिक या अंतर्राष्ट्रीय शब्दों में भी होता है। रोजमर्रा की स्पेनिश में के की जगह आमतौर पर सी या क्यू का इस्तेमाल होता है। Spanish words with K. Kilo. Kilómetro. Kiwi. Karate. Ketchup. Koala. Necesito un kilo de manzanas. I need a kilo of apples. मुझे 1 किलो सेब चाहिए। L. L. Libro. Libro. Tengo un libro nuevo. I have a new book. मेरे पास एक नई किताब है। Important. The Spanish letters double L can actually sound different depending on the country. In most Spanish-speaking places, like Mexico, Central America, and Spain, we pronounce it like the English letter, Y. However, in some regions, like certain parts of Mexico and the Andes, people use a softer, J, sound. If you go to Argentina or Uruguay, the double L is pronounced like SH. For learners, the best tip is to stick with the Y sound. It's the easiest to pronounce and will be understood everywhere. स्पेनिश भाषा में डबल एल अक्षर का उच्चारण अलग अलग देशों में बदलता है। सबसे ज्यादा जगहों पर, जैसे मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और स्पेन में, इसका उच्चारण या जैसा किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे मेक्सिको और एंडीज के कुछ हिस्सों में, इसे नर्म ज की तरह बोला जाता है। अगर आप अर्जेंटीना या उरुग्वे जाएं, तो वहां इसे श की तरह बोला जाता है। सीखने वालों के लिए सबसे अच्छा सुझाव ये है कि य की ध्वनि का इस्तेमाल करें। ये सबसे आसान है और हर जगह समझा जाता है। Lluvia. lluvia. Me gusta la lluvia. I like the rain. मुझे बारिश पसंद है। And that's all for today's episode. We covered the letters K, L, and double L in Spanish. Now, here's a quick question for you. Can you write one Spanish word using L in the comments? Don't forget to like, share, and subscribe so you don't miss the next episode in our Spanish alphabet series. In the next class, we'll continue with more exciting letters.